Shri
A very good morning, a very divine morning to all of you. Good morning, ma'am. Good morning. I'm sure everybody is very happy and healthy. Good morning, ma'am. Yes. Just now you heard this Lakshmi each mantra. Now, before I start with today's practice, let me what I feel, Um, you see, if you tell somebody every day that you are very sweet, you're very sweet, you're very sweet, you're very nice, or you say to your child every day, you are very intelligent, you are very healthy, you are very intelligent. Slowly, slowly, the child will have this in his subconscious. And slowly, slowly, the thought process would be this. Your thought process, what is your thought? आप universe में क्या डाल रहे हो? My child is very happy. My child is very healthy. What I'm trying to say, I'm saying that these words have a lot of power. हम thoughts डालते हैं. Now, when you play such mantra, अभी जो हमने ये मंत्र प्ले किया, हमने क्या किया? हमने ये थॉट, ये चीज अपनी यूनिवर्स में डाली. Because although money is not everything, but money is also very important and we all need this money, right? तो हमने ये थॉट डाला, इसीलिए ये बीज मंत्र हम चलाते हैं, या कोई भी मंत्र हम क्यों चैंट करते हैं. दिस इज द रीजन बिहाइंड इट. दिस इज व्हाट आई फील. सो whenever something is played every time on the screen, आप प्लीज उसके साथ फ्लो करिए, कुछ मत करिए, आंख बंद करके फ्लो करिए. मैं बहुत बार होपोनोपोनो चलाऊंगी, तो आप किसी की तरफ, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई रिलेशनशिप हील करना है, तो आप उस रिलेशनशिप को ध्यान में रख के बोलिएगा. आपको अपने लिए कुछ हील करना है, आप अपने को, एक्सक्यूज मी, आप अपने आप को ध्यान में रख के करिएगा. And then you see the difference in your energy. So next time when you do it with this mindset and you will change, you will see your change of energy. Your energies would shift, right? Chill. Coming back to our magic, again, the magic would be seen, understood, experienced by those who will believe in it. If I don't believe in it, I might not experience to that level. ऐसा होता है. So before coming to our today's practice, this book has taught us that gratitude. So gratitude, what would happen? When we are in gratitude, you see, ये सारे brain की कहानी है, hormones की कहानी है.
आपको कोई बहुत अच्छी चीज नजर आती है तो आपका ब्रेन को बहुत खुशी मिलती है, तो वो एक हार्मोन सिक्रीट करता है, बॉडी वो डायरेक्ट ब्लड में जाता है और उससे आपको वो फील आती है. नाउ व्हेन वी आर इन ग्रैटिट्यूड, व्हाट इज हैपनिंग? व्हेन वी आर इन ग्रैटिट्यूड, हमारे जो ब्रेन है, वो जो सिक्रीशन है, बिकॉज ऑफ दैट सिक्रीशन वी get positive vibes, right? So the brain sees the positive in our life. What is positive in our life? Secondly, अब जब आप आज आपका डे 3 है, मतलब अपन शायद चौथा या पांचवा दिन है अपना, आप देखिए जब हम ग्रैटिट्यूड करेंगे तो क्या होगा. हमको रोंडा क्या कहती है कि व्हेन यू आर इन ग्रैटिट्यूड क्या होगा, यू विल थिंक, यू विल हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट. और रोज जो ये हमसे 2 प्रैक्टिस करवाएंगी, कौन सी वाली? राइटिंग 10 ब्लेसिंग्स एवरी डे. और रोज अलग होगी. क्यों अलग होगी? दिन भी तो अलग है, हम चीजें भी तो अलग होंगी, एक्सपीरियंसेस अलग होंगे, राइट? सो हमें 10 रोज लिखने हैं. इफ वी वांट टू फील, इफ यू वांट टू टच दैट लिमिट, कि हाँ ये ऐसी कोई चीज थी. देखिए हम 1 घंटा डाल रहे हैं सुबह सुबह का. वी ऑल दोज हु आर प्रेजेंट हियर, वी ऑल आर वेरी बिजी पीपल. हम सबके पास बहुत काम है, बट हम ये 1 घंटा मी टाइम निकाल रहे हैं, विच इज वेरी गुड. applaudable means we really are the blessed people जो अपने लिए सुबह सुबह ये 1 घंटा निकालते हैं. Clap for yourself, tap your. हर्ष जी आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए. So dear, when this is me time, तो आप इसके साथ जो एसोसिएटेड चीजें हैं करके देख लीजिए. अब आप में से बहुत सारे लोगों ने काउंट योर ब्लेसिंग्स मीन्स जो कम से कम 10 है वो लिखी होंगी. जो मैंने पहले दिन कहा था आपको कि अपनी डिजायर्स लिख लीजिए, आई एम श्योर आप लोगों ने लिखी होंगी. यदि किसी ऐसा कोई बंदा है जिसको अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं चाहिए तो वो नहीं लिखे तो चलता है, कोई बड़ी बात नहीं है. बट यदि हम लाइफ अपनी, अच्छा और बहुत अच्छी लाइफ है, एवरीथिंग इज सेट, बट तो भी वी वांट टू गेट इट बेटर, राइट? या लाइक आई एम अ टीचर, तो मैंने मेरे स्टूडेंट को कभी, एंड आई टीच लैंग्वेज, तो मैंने मेरे स्टूडेंट को फुल मार्क्स कभी नहीं दिए. मुझे कुछ बच्चे से कोई दुश्मनी नहीं थी, बट देर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट की. जो इतना अच्छा लिख सकता है वो इससे बेटर भी लिख सकता है और बेटर लिख सकता है. तो यदि लाइफ बहुत अच्छी है तो इससे और अच्छी भी हो सकती है जो हमने नहीं एक्सपीरियंस की है. So this is how gratitude writing will bring us to that level, right? So I'm sure all of you have written. Those of us जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, it is never too late. हम आज से भी स्टार्ट कर सकते हैं, पर करना पड़ेगा. सिर्फ सुनते रहेंगे ना तो 6 दिन बाद आप आज क्या सुना, you will forget. Okay. So I take it that everybody is writing. The last thing before I start, कल हरीश सर ने अपने को द मैजिक रॉक बताई थी. सो कैन यू ऑल प्लीज कम ऑन कैमरा एंड शो मी योर मैजिक रॉक. मेरी मैजिक रॉक एक गणपति जी में बदल गई थी और फिर समहाउ वो कैसे चली गई, मेरे एक बैग में चली गई और पता नहीं कहाँ चली गई. तो मैंने ये मान लिया कि ठीक है भगवान जी चाहते हैं दूसरे मैजिक रॉक लेके आइए. तो आई हैव गॉट दिस क्रिस्टल. सो मैंने अपने लिए, आई हैड एट होम, तो मैंने अपने लिए वेरी गुड. अरे यार सुषमा जी, आपका और मेरा सेम है क्या? आप म्यूट पर हो. ओ हरीश सर के पास भी ऐसा ही है कुछ मिलता जुलता. ये ऑल ऑफ यू प्लीज कम ऑन स्क्रीन एंड शो मी योर That color मैजिक. different है. Yes, हाँ. ma'am. This one, my. सिट्रिन, ये क्रिस्टल को कहते हैं सिट्रिन. हरिकिशन सर वंडरफुल सर. मंजीत सर ब्यूटीफुल. वाओ. मैम जैसे आप गणपति बोलते हो ना, ऐसे ही मेरे भी होता इसमें जाएगा. वेरी हो गुड. रहा है मैम. उसका हाँ होगा. पूरा ट्रंक दिखता है. वेरी गुड जतिन सर.
राजीव रंजन सर, आपके पास भी है क्या? राजीव रंजन सर, डू यू हैव वन? चलें, हम में से जिसके पास नहीं है, आप प्लीज लेके आइए। और मैम मेरा ये बड़ा सा है लेकिन इसमें रखी हूँ। हाँ, वो कोई बात नहीं है, आप किसमें भी रखिए, आप किसमें भी सब रखिए। बहुत अच्छा लगता है सर। मैं ज्वेलरी के पाउच में रखती हूँ, आप किसी में भी रखिए, छोटे से पाउचेस आते हैं, आप उसमें रखिए। अभी एक बात बताइए साहब, आप लोग सबको हरिद्वार पता है, आपको सबको गंगा माँ पता है, राइट? ऐसा कोई भी नहीं है जिसको नहीं पता हरिद्वार से गंगा माँ होती है। अब एक कहावत है, वहां जाके या कहीं पर भी आप मानो तो मैं गंगा माँ हूं, नहीं तो बहता पानी, राइट? अब आप मानो तो ये एक मैजिक रॉक कैसे हो सकती है? देखिए माय डियर, क्यों बोलते हैं कि आपको छोटी लानी है? जब आप अपने हाथ में रखते हैं, जब आप आपके हाथ में रखते हैं तो ये आपके हाथ में ऐसे आनी चाहिए, इसलिए छोटी कहते हैं। आपको चुभनी नहीं चाहिए, इसलिए छोटी कहते हैं, कि एडजस्ट नहीं होने चाहिए। अब इसका पर्पस क्या है? चलिए आप लोग एक और एक्टिविटी करिए मेरे साथ। आप लोग अपने हाथ खोल लीजिए और अपने हाथों को थोड़ा ऐसा रब कीजिए, जहां पर भी आप बैठे हैं। आप फिर मुझे शेयर जरूर करिएगा। जस्ट रब योर हैंड। अब आप अपने हाथों को थोड़ा नजदीक लाइए ऐसे। यू विल फील कि आपके हाथों में कुछ है, कुछ है। थोड़ा और नजदीक लाइए, नहीं महसूस हो रहा है तो हाथ जोड़ना नहीं है। इन हाथों में से एनर्जी पॉइंट है, इसमें से एनर्जी निकलती है। जो लोग भी हीलिंग करते हैं वो जानते हैं कि हाथ कितने इंपॉर्टेंट चीज है, आंखें कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हम जब बोलते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं। अब जब आप ये रोज मैजिक रॉक अपने हाथ में रखते हो तो आपके हाथ की एनर्जी इसको मिलती है, ये एनर्जाइज होती जाती है। कुछ टाइम के बाद आप इसको एनर्जी देते हो, ये आपको एनर्जी देती है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी जा रही है ना इसमें, आपकी पॉजिटिव एनर्जी जा रही है। जितने भी लोग हैं, आप सबने वो कहानी सुनी होगी कि दो पेड़ रख लीजिए आपके घर में छोटे छोटे, एक को बहुत प्यार करिए, बहुत दुलारिए, और एक को खूब गालियां दीजिए। वो जिसको आप गाली देंगे वो फ्लरिश नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। इतना फर्क है हमारे वर्ड्स का, हमारी फीलिंग्स का। तो जब हम इसमें रोज वो चीजें डालते हैं जो अच्छी हुई थी आज, और मैं आज सिर्फ नहीं डाल रही हूँ, आज कल परसों एवरी डे आई एम डूइंग द सेम थिंग, इससे क्या होगा? आपके वो पॉजिटिव वाइब्स इसको एनर्जाइज करते रहेंगे, राइट? आप अपने बच्चे को रोज बहुत अच्छे से सोक्ड ड्राई फ्रूट्स खिलाते हो, हेल्दी चीजें खिलाते हो। आपका बच्चा हेल्दी होगा कि नहीं होगा? आप अपने लिए करते हो तो आप हेल्दी होगे कि नहीं? फॉर श्योर, ये वो चीजें। बट बिलीव इन इट, आई टॉक अबाउट इट आगे चल के। और एक सिंपल सी चीज है, आप देखिए ये प्रैक्टिस स्टार्टिंग में क्यों है, आखिरी में क्यों नहीं दी थी रोंडा ने? क्योंकि इन सब चीजों का बहुत महत्व है, बहुत महत्व है, राइट? एक और चीज, आज का जो हमारा डे 3 है, द मैजिकल रिलेशनशिप्स। आप देखिए हमारी लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अपन डे 1 से बात कर रहे हैं, हेल्थ है, मनी है, करियर, बिजनेस, जॉब, कुछ भी कह लीजिए आप, हैप्पीनेस कह लीजिए, फैमिली कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, रिलेशनशिप्स कह लीजिए। हमारी लाइफ इसके इर्द गिर्द घूमती है, राइट? अब इन ये सारे पिलर्स है हमारी लाइफ के, एक भी थोड़ा सा हिलता है तो लाइफ में चैलेंज आ जाता है। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द फर्स्ट प्रैक्टिस। उन सब चीजों से, इन सब चीजों से रिलेटेड चीजें निकलेंगे आपको, बाकी के दिन भी है ना, दे आर ऑल रिलेटेड टू दैट। बट आप देखिए, she has started with magical relationships. That is, it is such an important pillar of our life. So, dear friends, let us start today's magical practice. Who would like to read? I'll share the book. Anybody interested to read? मैं पढ़ Yes. लूंगा। और कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा था मैम, मंजीत। मंजीत सर। मंजीत। जतिन सर, क्या कहते हैं आप? आधा आधा पढ़ेंगे दोनों?
हाँ जी, हाँ जी मैम, हाँ जी। ओके ओके, थैंक यू। चल। मंजित सर, मैं आपसे स्टार्ट करूंगी। हाँ जी, हाँ जी। चलो जाना ला। आप देखिए, ये आपको हर जगह शाइन क्यों नहीं नजर आती है? आपको तब तब नजर आएगी जब जब आप बिलीव करेंगे। ये मिरर क्यों दिया है? यू सी, वॉट एवर आई गिव टू माई रिलेशनशिप्स, आई विल गेट दैट ओनली। ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे एक तरफा चीजें नहीं मिल सकती हैं। क्यों नहीं मिल सकती हैं? अपन ने फर्स्ट डे पढ़ लिया था, वॉट एवर यू गिव आउट टू दिस वर्ल्ड, यू विल रिसीव द सेम थिंग। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल कोट किया था, अपन जब बड़े होते छोटे थे तो मम्मी बोलती थी कि भाई दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे तो हम ही गिरेंगे, तो मतलब ये ट्रू है। सबकी मम्मी ने ये कहा होगा, दैट मीन्स दिस इज ट्रू। तो जब गड्ढा हो सकता है, मतलब यदि किसी का कर्स कह लीजिए, या किसी का व्हाट यू कॉल इट, किसी का कर्स में बहुत ताकत है, तो फिर ब्लेसिंग्स में कितनी ताकत होगी? अथा, isn't it? So this mirror shows that whatever relationship जो भी मैं दे रही हूं, that will come back to me. Mirror is not giving anything to us, I am giving, right? In the same way, if you show appreciation, if you show gratitude, ये बुक का यहाँ पर क्या मतलब है? You see, इस बुक का ये मतलब है कि जब आप किसी के बारे में अच्छा अच्छा लिखते हो, तो आपके जो फीलिंग्स, जो आपकी वाइब्स होती है, वो कैसी होती हैं? बहुत खूबसूरत। आप सबने ये महसूस किया होगा कि कुछ इंसान होते हैं अपने लाइफ में जिनके साथ अपने को बात करना बहुत पसंद है, या उनके साथ बैठना बहुत पसंद है। सिंपल सा रीजन है, उस इंसान की बॉडी में से हम सब वाइब्रेट करते हैं, मत भूलिएगा। तो उस इंसान की बॉडी में से जो वाइब्रेशंस निकल रहे हैं, वो बहुत पॉजिटिव है, वो हमारे को एक अच्छी फील दे रहे हैं। Therefore we want to sit with that person. और कोई इंसान ऐसा होता है, हम उस लगता है कि बस जाओ, नहीं बात करनी है ज्यादा, या किसी पार्टी में से निकलने लगते हैं, अब जाओ यार, बहुत मजा नहीं आ रहा है। वही वही सेम फंडा। यस यस मंचित सर। Imagine if you were the only person on earth, you would have no desire to do anything. What would be the point in creating a painting if no one could see it? What would be the point in composing music if no one could hear it? What would be the point in inventing anything if there was no one to use it? There would be no reason to move from one place to another, because whenever you went would be the same as where you were. No one would be there. There would be no pleasure or joy in life. यस सर। देखिए, सच अ ब्यूटिफुल थिंग इट इज रिटन। एक मिनट के लिए आप लोग आंख बंद करिए, एक मिनट के लिए आंख बंद करिए। जहां पर भी आप काम करते हैं, आप लोगों को अचानक से 1 लाख रुपए का इनाम मिला है, या 1 लाख रुपए का अचानक से फायदा हो गया है। अब वो 1 लाख रुपया देखिए, आप चेक में देखिए, डिजिटल देखिए, कैसे भी देखिए, उस 1 लाख रुपए को आप प्लीज अपनी आंखों के सामने लाइए। अब वो 1 लाख रुपया अचानक से, जो आपको पता नहीं था कहां से आने वाला था, और वो आ गया, और वो पूरा आपका है। हाउ वुड यू फील? और वो फीलिंग आप किसके साथ शेयर करना चाहोगे? ढूंढोगे आप इधर उधर, तो आप सोचो आप किसके साथ शेयर करना चाहते हो। किसी को नहीं बताना है, आप मन में करिएगा। अब उस वक्त, अब आपने सोच लिया। अब आप सोचो, उस वक्त आपके पास कोई तरीका नहीं है किसी को भी बताने का, आपके पास में भी कोई नहीं है। आप देखिए, आपके अंदर खुशी की ढेर सारी खुशी है, आप इसको रास्ता देना चाहते हो। कोई तो सुनो, मेरे पास अचानक से 1 लाख रुपया आया है, विच इज ऑल माइन, आई कैन स्पेंड इट, राइट? कोई भी नहीं है, किसको बताऊं, किसको बताऊं? फिर अचानक से मुझे कोई दिखता है, अरे मेरे तो ऑफिस का पियून आ रहा है, पियून को भी बताने में मजा आ रहा है मुझे, राइट? तो हमें
कोई चाहिए. So therefore हमारी सोसाइटी में we are blessed कि हमारे पास relationships है. We need somebody to share it, right? So we want people around to share our happiness, to share our challenges, everything. Yes, sir. It's your contact and experience with other people that give your life joy, meaning, and purpose. Because of that, your relationships affect your life more than anything else. To receive the life of your dreams, it's vital that you understand how your relationships affect your life now and how they are the most powerful channels for gratitude to start magically changing your life. Yes. अब एक बात बताइए माय डियर. अब जो हमें नए हैं या कोई भी हम नई चीज करते हैं, तो जब तक हम प्रैक्टिस करते हैं, अभी आप लोगों को किसी ने स्कूल टाइम में फुटबॉल खेला होगा, अब छूट गया सबसे, फॉर एग्जाम्पल. अब आपसे कहा जाएगा चलो भाई मैच है, चलिए मंजीत सर आज आपको फुटबॉल खेलना है. अब मंजीत सर ने फुटबॉल बहुत साल पहले खेला था, अब आता है, दैट इज अनदर थिंग. अब खेला नहीं है, तो आप मुझे बताइए कि उसका परफॉर्मेंस, जो वो गेम का परफॉर्मेंस होगा, वो सेम होगा कि अलग होगा मंजीत सर? अलग होगा. अलग होगा, क्योंकि यू आर आउट ऑफ प्रैक्टिस. नाउ इन द सेम वे हमारे पास सब रिलेशनशिप्स है, बहुत सारे रिलेशनशिप है हम सबके पास, बट मुझे तो वो ग्रैटिट्यूड, वो छोटी छोटी चीजें देखनी नहीं आती कि इसकी क्या अच्छी है. मुझे तो ये दिखता है कि देखिए एक और चीज सुनिए आप लोग, कि हर इंसान अलग सोचता है. अपन यहाँ पर जितने लोग हैं, क्या हम लोग सेम सोचते हैं? नहीं. हर सिचुएशन में हम लोगों का रिएक्शन लिया जाएगा या हम लोगों का एक्सपीरियंस लिया जाएगा. इट वुड बी वेरी डिफरेंट. सो अंडरस्टैंड डियर फ्रेंड्स, everybody is at a different frequency. सब इंसान की सोच अपनी है, कोई गलत कोई सही नहीं है. I remember when I was very small in my primary school. So one of the girl during on her birthday, मुझे ये चीज याद रह गई है, on her birthday she was wearing a very short dress, जो अभी बड़ी common है. उस time she wore a very short dress. So my friends, they were gossiping amongst themselves. Oh, she's wearing such a short dress. Now, देखिए, for the girl who's wearing it, it is fine. She's used to do that. उसके लिए common चीज है. पर जिसने नहीं करा है, उसके लिए हो वाली सिचुएशन है. दोनों अपनी जगह सही है. तो इसलिए कोई भी शिकायत नहीं हो सकती. कोई भी, हर इंसान, मैं कल ही बात कर रही थी कि कोई भी इंसान इस धरती पे गलत करने नहीं आया है कि वो जानबूझ करके कि मैं तो गलत ही करूंगा. Nobody wants to do that. So dear friends, these relationships, they affect us too much. अब सपोज मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ. अपने पास बहुत सारे रिलेशंस हैं, उनमें से हम क्लोज रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, बिकॉज वी आर सर्कल्स. एक बहुत क्लोज है, फिर थोड़ा सा है, फिर वैसा करके. नाउ इस क्लोज रिलेशनशिप्स में मेरे पास बहुत सारे लोग हैं फॉर एग्जाम्पल, और उसमें से एक इंसान ने मेरे लिए बहुत गलत गलत कहा, क्योंकि हो सकता है उसको मेरा वो रवैया अच्छा नहीं लगा था, इसीलिए उसने मेरे लिए वो कमेंट किया. अब बाकी 19 लोग मेरे लिए बहुत अच्छा बोलते हैं, एक इंसान ने मेरे लिए अच्छा नहीं बोला. अब क्या होगा साहब? मेरा, ये मैं जनरल बात कह रही हूँ, हम सबके लिए, मेरा सुख, हमारा सुख चैन, all our peace of mind would go somewhere, right? Our peace of mind would go somewhere. What we will do, we will keep thinking about it. मतलब सोते जागते, every time it is banging in your head. 19 people are saying good things. We are not bothered about that. That one person said something, this is how we are. Because by default, the negative goes, abhi aap, you don't do anything for some time, sit quietly, after some time all the negatives would start. Therefore, you have to think of positive purposely. And for this, such a simple thing called gratitude helps a lot. So, to receive the life of your dreams, it is very important that we have
good relationships, which are the powerful channel. They could be a powerful channel of gratitude for us. Yes, sir. Science is now confirming the wisdom of the great sages of the past with research studies showing that people who practice gratitude have closer relationships, are more connected to family and friends, and have other people look upon them favorably. But probably the most astounding statistics that has come out of the research studies is that for every one complaint about another person, whether in thought or word, there have to be 10 blessings for the relationships to flourish. Any less than 10 blessings for every one complaint and the relationships will deteriorate. And if the relationship is a marriage, it will most likely end in divorce. Yes. Before I start about this paragraph, just all of you close your eyes and just check. When was the last time you showed gratitude to your spouse? Real, huh? Real gratitude, मन वाला. सोचिए आप लोग. मैंने पिछली बार अपने स्पाउस के लिए कब ग्रेटफुल हुई थी? क्या अच्छा कहा था मैंने? देखिए, बाय डिफॉल्ट हम हमारे स्पाउसेस को 2 सेकंड में जो बोलना होता है खट 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 बोल देते हैं, जो अच्छा नहीं होता है, राइट? मैंने जस्ट 2-3 दिन पहले किया था मैम। ओके, अपने ब्रदर इन लॉ के लिए कि वो अपनी जगह खुश रहें और मैं अपनी जगह। वेरी गुड, वेरी गुड। आप, अब मेरा क्वेश्चन है आप सब उन लोगों से कि आप सब लोग अपने स्पाउसेस के बारे में सोचिए। व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू अप्रिशिएटेड, यू प्रेज्ड योर स्पाउस? मन से भाई, देखो ये यूनिवर्स हमारे मन से काम करता है, वर्ड से काम सिर्फ नहीं करता है। कैन एनीबडी राइट इन चैट व्हेन वाज दैट लास्ट टाइम? इफ यू फील लाइक इट, इफ यू डोंट फील लाइक इट्स ओके। So my chat is not rolling means nobody did it. Is that so? There is nobody in chat, so that means it did not happen. I always do it, okay? It's been long. Very good. Be very, ये मुझे बहुत पसंद है। जो लोग बहुत ट्रूली आंसर देते हैं ना, आई लव यू फॉर दिस। व्हाई? देखिए, हम अपने आप को बेवकूफ नहीं बना सकते, हम दुनिया के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वी शुड बी वेरी ट्रू टू आवरसेल्व्स। आई डू इट एवरी डे। एक बात बताइए साहब, वेरी गुड जतिन सर, एक बात बताइए माय डियर फ्रेंड्स। मैं एक चीज, आप सब लोग यहाँ पर स्क्रीन पे हैं, अब मैं तारीफ हूँ, कितने अच्छे लोग हैं, आप सुबह सुबह टाइम निकाल के आए हैं। आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। पर तो मैंने कितनी भी पर के आगे चीजें लगा दी, और पर के बाद जो मैंने बोला वो आपके जहन में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं सेंटेंस को और क्लियरली बोलती हूँ। आप लोग बहुत अच्छे हैं, सुबह सुबह टाइम निकाल के आते हैं, सुनते हैं, शेयर करते हैं, बट आप लोग बहुत आलसी हो गए हैं यार, आप लिखते नहीं हैं। तो अब सारा फोकस कहाँ गया? सोचिए, अब फोकस कहाँ गया? वो लास्ट लाइन पे। तो हम अप्रिशिएट करते हैं तो साथ में ये भी बोलते हैं क्या कि मैं तो ये बहुत अच्छा करती हूँ, पर मेरे हस्बैंड नहीं करते। तो यहां पर अप्रिसिएशन नहीं है, राइट? So when I am appreciating, it is truly appreciation. There is no comparison कि मैं अच्छी कि वो अच्छे, right? So हमारे relationships they spoil because of one thing, that is complaint. आधे दिन के लिए एक और एक्टिविटी करिएगा, आधे दिन के लिए एक पेपर का बैंड बना दीजिए, या एक कुछ भी बना दीजिए, कुछ भी जो आप अपने इस रिस्ट पर टाई कर सकें, और उस पर लिखिए नो कंप्लेन डे। आज मैं कुछ भी कंप्लेन नहीं करूंगी। आप आधा दिन तक भी उसको निभा के देखिए, कैसा लगता है? डियर फ्रेंड्स, करेंगे नहीं तो महसूस नहीं होगा। यू विल नॉट नो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, और एक नया एक्सपीरियंस होगा लाइफ का। आज देखिए क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव रिलेशनशिप्स, व्हेन वी टू पीपल सिट डाउन, हम क्या बोलते हैं? उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसा करना चाहिए।
मम्मी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मम्मी को ऐसा बोलना चाहिए था, उसकी शादी में उसने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, मेरे साथ ऐसा करना चाहिए था। अब क्या है, आपके पास में एक बिल्ली है, आपके पास में एक कुत्ता है. You have a dog and you have a cat. They are two different identities. You cannot change a dog to cat and a cat to a dog. So what do? We have a bada sa hunter हाथ में लेके we keep on lashing. This person should not do this. इसको ये नहीं करना चाहिए था, इसको ये नहीं करना चाहिए था. But unfortunately वो hunter सामने ही जाता है, पीछे नहीं आता कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था. So dear friends, when we complain, there stops the show. So what is written for one complaint now from today? If you are saying something wrong, according to you, right? There is nothing wrong or right. If you are saying this does not happen, आपके हिसाब से वो एक complaint है, या अपन कुछ किसी के लिए कह देंगे, तो उसके एवज में to balance it, we need 10 good things to be spoken about that. नहीं तो we stop our blessings. And we stop the relationship from flourishing. Why? देखिए आप, you must have seen so many cases, a married couple, they had a love marriage, and then that marriage ended. Why am I talking about love marriage? It can be any marriage. Why am I talking about love marriage? It is because the two people, they have known each other well. They have understood each other well because they have met so many times. They have dealt with so many things. Same couple, they end up in a divorce. Why? Something has gone wrong, right? And this complaining is one big demon which would spoil any relationship. आप करके देखिए, अपने बच्चों के साथ भी करके देखिए. आप रोज उनसे complain करिए, they will not come and sit with you. They would avoid our company. कि whenever I'll go, भाषण मिलेगा. Right? So we will be very careful. What are we talking? Yes, sir. I'll go a little fast today. Yes. Gratitude makes relationship flourish. As you increase your gratitude for any relationship, you will magically receive an abundance of happiness and good things in that relationship. And gratitude for your relationship does not change only your relationship, it also changes you. No matter what your temperament is now, gratitude will give you more patience, understanding, compassion, and kindness, to the point where you won't even recognize yourself. The little irritations you once felt and the complaints you had in your relationships will disappear, because when you truly grateful for any person, there is nothing you want to change about that person. You won't criticize, complain about, or blame them, because you are too busy being grateful for the good things about them. In fact, you won't even be able to see the things you used to complain about. Yes. So once just check, once there is no complaint, देखिए complaint and appreciation दोनों एक ही तलवार में नहीं रह सकते हैं. I mean दोनों एक ही म्यान में नहीं रह सकते हैं. Either gratitude would be there, or complaint would be there, or appreciation would be there. Both the things will not be there. And we complain when there is no appreciation, when there is no respect. Your complaint, हमको लगता है कि नहीं, मैं तो उसका बहुत, I want to help that person, therefore मैं उसको बताना चाहता हूँ कि आप ये गलत कर रहे हो. But truly the sense is there is no respect for that person. See, we all are full of positives and negatives. हम सब में है. वो number would vary, right? So did you see the positive in me? तो ये वही वाली बात हो गई, रुचि मैम आप बहुत अच्छे हो, पर तो स्टोरी खत्म हो गई मेरी यहाँ पर, right or not? So the gratitude would cement our relationship. Cement आप देखते ना कितना solid building बनाता है. So it will cement our relationship. अब जब हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं ना, ये अपना सिस्टम है. When you think good about others, you feel good about it. It is not that you will feel about others only. So those who practice gratitude will have more passion. They'll be passionate, compassionate. They'll be very kind. These are the qualities you will find in that person. If a person is very irritable person, if the person gets irritated very fast, that means there is absence of gratitude
the person doesn't practice gratitude, a person has all the complaints about the world. Therefore, the person gets irritated so fast. Person has to work upon himself a lot. Right? Shall So when you're truly grateful about others, you will not criticize others. You will not blame others. In fact, you have a very beautiful relationship. We can only be sad to be alive in those moments when our hearts are conscious of our treasure. Carry on, sir. Thornton Wilder, 1897 to 1975, a writer and playwright. Words are very powerful. Okay, sir. You want me to again? No. Carry on, sir. Okay. Yeah. Thank you. Words are very powerful. So when you complain about any person, you actually harm your life. It is your life that will suffer. By the law of attraction, whatever you think or say about another person, you bring to you. This is very reason why the greatest minds and teachers of the world have told us to be grateful. They knew that for you to receive more in your life, for your life to magically increase, you have to be grateful for others just as they are. What if every person close to you said, I love you just the way you are? How would you feel? Yes. Sara jhagda hi khatam. Everything is fine. If I accept the person, you see, there are 4 AAs for gratitude. 4 A's where we can use with gratitude. For example, first is sabse pehle is acceptance. Just accept the person as it is. Don't try to change the person. Again, see all the positive in that person, so you will not feel like changing the person. When we look at the negatives, or when we think this is wrong and we complain, that is what happens. So this is when you complain about others, you actually harm yourself. मतलब वही वाली चीज है, अपन गड्ढा दूसरे के लिए खोदेंगे, हम करेंगे. Right? So, by the law of attraction, you see, when I complain about others, what thought would go in the universe? What vibration would be there? आप भूलिएगा नहीं, my dear friends, हम सब लोग energies हैं. We all vibrate. Now, हम सब जब complain करते हैं, we are vibrating low. So when you are vibrating low, what would you attract in your life? Jhagda, irritation, complaint from others. So therefore, in order to vibrate high, we have to take support of gratitude. Therefore, in the world, it is said that if you want your life to change magically, और my dear friends, मैं आप लोगों से एक ही चीज बोलूंगी. If you don't want to believe in this, don't believe. Just try to do it for some time. नहीं अच्छा लगेगा, आपको बाद में believe करना है after experience, do that. But ये जो कह रहे हैं ना, आप एक बार करके देखिए. And then you see the difference. Then you believe it. Then you believe in it. So dear friends, just do it and then understand and experience. Your life would magically change. When was the last time you praised somebody for something? आंख बंद करिए एक बार और पिछले के 8 दिन देखिए. इन पिछले, आप बहुत आगे मत जाइएगा, पिछले 8 दिन में देखिए मैंने किसके लिए प्रेज किया था मन से. हाँ डियर, हम सब लोग बहुत स्मार्ट हैं, ऊपर से डिप्लोमेटिकली तो हम बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलते हैं. Again, dear friends, words have lot of power. Words have lot of power. I am a teacher. When the mothers, they come to me, they say, my child is very weak, he doesn't study. और ये बात वो सिर्फ मुझसे नहीं कहती, मेरा बच्चा पढ़ता ही नहीं है. ये बात वो सबसे कहती है. तो आप जितनी बार उस चीज को कहोगे, वो अफर्म होती जाएगी. वही एनर्जी हम उस चीज को दे रहे हैं. सो ये चाहे अपना कोई भी फैमिली मेंबर हो, मेरा हस्बैंड हो, मेरा बच्चा हो, मेरा पड़ोसी हो, मैं जो बार बार उनके लिए बोलूंगी, आई एम गिविंग दैट एनर्जी, आई एम आस्किंग दैट टू हैपन. अब तो आप सब लोगों को पता है अपनी आस्क होती है. सो दिस इज हाउ वी क्रिएट आवर लाइफ. तो अब हम ये नहीं कह सकते कि हम तो अपने क्रिएटर नहीं है, हम क्यों गलत चीजें क्रिएट करेंगे. दिस इज हाउ
We create good and we create bad. Right? Okay. Yes, sir. Today's magical practice is being grateful for people just as they are. Even if all of you even if all of your relationships are currently good, they will increase with more magnificence through this patience, this practice. And with everything you find to be grateful for in each person, you will see great gratitude perform its breathtaking magic, and your relationship will be stronger, more fulfilling, and more enriching than you ever thought they could be. Yes. So, my dear friends, if you feel you want to have good relationships, if you feel that good relationships will give me a lot of happiness, and it will indeed give us a lot of happiness. So now today, from today onwards, we would be very grateful for our relationships. We will सिंपल सी चीज करो कि आप कहोगे कि मैं ग्रेटफुल कैसे रहूं. सिंपल है, आप उसमें से कंप्लेन मत निकाल. ये सोचिए कि हर इंसान अलग सोचता है, उसको ये ठीक लगा होगा, इसीलिए उसने ये करा है. राइट? तो you will have very fulfilling life, very strong relationships, and you'll be very happy about it. Yes, sir. Choose 3 of your closest relationships to be grateful for. You might choose your wife, your son, and your father, or your boyfriend, your business partner, or your sister. You might choose your best friend, your grandmother, and your uncle. You can choose any 3 relationships that are important to you, as long as you have a photograph of each person. The photograph can be just of the person or the both of you together. Now, Ji, today's practice. What is today's practice? Therefore, yesterday, Harish sir told you to arrange some photographs. Now, in this particular practice, what are we going to do? We are going to take our close relationships in this particular practice. We are going to take close relationships, as you have seen on the screen. It can be anybody. So, the only requirement is you should have the photograph of that person, right? Now, why close relationship only? Because you see, this is our first line of our relationships, our close relationships, right? So this is our first line. We always want to make it very strong. So wherever you are, let us do it little bit more and see. और हो सकता है आपके उस फर्स्ट लाइन में आपने कभी ग्रैटिट्यूड करा ही ना हो किसी के लिए. ये भी पॉसिबल है. So what are we going to do? This is the today's practice, and my dear friends, please do it and make your relationships very strong. So what will you take? 3 photographs of any 3 people in your life. As you have seen, it can be anybody. So, and it can be with you, as said, the photograph can be solo or with you also. So this is the first requirement. You need to have the photograph. Yes, sir. Once you have selected your 3 relationships and photographs, you are ready to set the magic into motion. Sit down and think about the things you are the most important grateful for each person. What are the things you love the most about this person? What are their best qualities? You could be grateful for their patience, ability to listen, talents, strength, good good judgment, wisdom, love, sense of humor, eyes, smile, or kind heart. You could be grateful for the things you enjoy doing with the person, or you can recall a time when the person was there for you, cared for, or supported you. Yes. Yeah. Now, once you have selected the photographs, you have to do this activity. You have to do in at one go. Matlab, you have taken 3 people, right? Now, what are you supposed to do? You, like, these are 3 very important people in your life. Now, what are we going to do? We will look at the best qualities in that particular person. For example, I'm doing it for my daughter or my husband or my mother. But I would suggest, whenever you are doing the 3 things, you do it together. That is what she's also suggesting. You look at
the positive or the good qualities of those people, all three people you're talking about. What do you love about that person? और वो आपका close person है तो उसने बहुत कुछ किया होगा आपके लिए, right? So first is what do you love about that person? Then the second you have to think what has that person done for you. For example, your mother. Again, I would say mothers are the most neglected creatures on this world. Why? Again, just imagine, my dear friends, close your eyes and see. When was the last time you praised your mother? आप हमेशा ऐसे करते हो मेरे साथ, खाना भी टाइम पे नहीं बनाते हो, एक बार कभी लेट हो जाए तो, राइट? सो ऐसे आप सोचिए कि हम कौन से वर्ड्स यूज करते हैं अपनी मदर के लिए. All of you just, you have to tell us, we have to tell ourselves. We have to talk about all these things to ourselves. Now just imagine, when was that last time I appreciated, I was grateful to my mother? Just imagine. So now, when you are grateful for that person, or the irony of life is, my dear friends, when the person goes away, I see so many sons, daughters, they miss their parents because now they are gone. But when they were there, they never appreciated them. And there are people who would just worship their parents. There are people also like that. So you just look at the relationship, how the relationship, rather, this is again my opinion, I have seen so many people, those who have never respected their mothers, they are not very flourishing people. They don't have a lot of peace of mind in their life. It's my opinion, my observation. It could be other way around, right? So these are all the things. So when we are grateful for them, our relationship would be very different. Yes. Manjeet sir? Yeah, just a second. After you have spent some time thinking about what you are grateful for about the person, put their photograph in front of you with a pen and notebook or on your computer. Choose the 5 things you are the most grateful for. Looking at photograph of the person as you make your list of 5 things, begin each sentence with the magic words thank you, address the person by their name, and then write what you are grateful for. Thank you once for what you are doing. Okay. Manjeet sir, can I ask Jatin sir to take over? If you Sure, don't sure, mind, sure. sir. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you so much, Manjeet sir. No problem. You are welcome. Jatin sir, will you take over? जी मैम. Let me talk about this paragraph. So what is the practice? You have taken the photograph of 3 people. You want to be grateful, your close relatives. And then keeping that photograph in front of you, you start with thinking what is good in them, what you like. The good in them would be every person can see different good in different people. So what according to you is good in their life, in them? Start appreciating that. Now, how will you appreciate that? You will write, you will take a pen or a paper and you will, looking at the photograph, starting, how will your sentence start? Thank you. For example, it is, it's your boss, or if, for example, it's your grandma, for example, it's your sister or a brother. So write their name. Thank you. Their name, because the name won't be very different. For what? For example, your boss, or for example, your grandma. She has for today, or she always does that she keeps things ready for you before you go to school. So now, isn't it very easy? You don't have to worry for anything. She does everything for you. So, or the grandma understands you very well. Whenever there is a situation, you need support from the family. She's the one who understands well. So, thank you, grandma, for understanding me. Thank you, grandma, for suggesting me good things. देखिए, माँ बाप तो सबके सब अच्छा ही करते हैं. किसी के भी माँ बाप गलत काम नहीं करते. We all are parents. Just imagine, do you want to do anything
not which is not healthy, not happy for your child. We know nobody wants anybody to do something for their kids. So I would suggest you do for somebody else in the close context, right? So look at the photograph, that person, and then make list of 5 things, beginning with thank you, the name, and for what. All the 5 things will have a different reason, right? And for example, she's written, thank you, John, for always making me laugh. Or thank you, Mom, for supporting me through college. ये एक ऐसा इंसिडेंट है कि जब when a person requires support, सारे लोग support नहीं कर रहे हैं और वो सही है. So therefore she's saying, writing like that. So dear friends, I'm sure that this practice is very clear. Any doubt, please ask me again. मैम इसको कौन सी वाले बुक पे लिखना है? आप एक ही कॉपी जो आपने बना रखी है ना, उसमें ही लिखना है. आपने कितनी बुक कॉपीज बनाई है श्वेता जी? मैम ड्रीम्स वाली एक और ब्लेसिंग्स वाली एक. बस ठीक है, तो आप ड्रीम्स वाली को अलग रखिएगा, आप इस ब्लेसिंग्स वाली में लिखिएगा इसको. जो भी रोज की प्रैक्टिसेस होंगी ना, और जो प्रैक्टिस होगी, और जो 10 ग्रेटिट्यूड टू ब्लेसिंग्स हम रोज लिखते हैं कम से कम, वो आप एक ही कॉपी में लिखिएगा. क्योंकि ये प्रैक्टिस रोज नहीं होगी, आप उसमें डे वाइज लिख दीजिएगा. फॉर एग्जाम्पल आज डे 3 है, तो आप डे 3 द मैजिकल रिलेशनशिप्स उसको ऊपर हेडिंग दीजिएगा, और अपने जितने भी 3 लोगों के आपने फोटोग्राफ लिए हैं, आप उनके बारे में 5-5 लाइन एक बार में लिख लीजिएगा. एंड माय डियर फ्रेंड्स, you have to do it all 3 together. Because क्यों? जैसे अभी आप लिखते हैं 10 blessings. अब आपने सुबह 2 लिख ली, फिर दिन में कभी 3 लिख ली, फिर शाम को रात को सोते वक्त लिख ली. आप देखिए, आप उस gratefulness वाली फीलिंग में नहीं आ पाते यहाँ पर. So for us to have that feeling, we need to write all 10 together. वो 10 count your blessings आपको एक साथ ही लिखनी होती है, और फिर उसको रिविजिट करके थैंक यू थैंक यू थैंक यू भी उसी वक्त ही लिखना होता है. ऐसा भी नहीं होता है कि मैंने सुबह तो 10 अपनी काउंट योर ब्लेसिंग्स लिख ली और रात को मैं उसके लिए थैंक यू कर रही हूँ. फीलिंग ही नहीं आएगी. We will that feeling of gratitude will fizzle out. So in the same way, when we are talking about our 3 relationship, we will do it together. पहले 1, then 2nd, and 3rd. This is how. Yes, dear. When you have finished your list for 3 people, continue with this magical practice by taking the photographs with you today and putting them in a place where you will see them often. Whenever you look at the photographs today, thank the person by saying the magic words thank you and the person's name. Thank you, Hele. Now, how are we going to do? For example, now I have written all the 5 things for 3 people. Now, after that, I will keep the photograph of these 3 people somewhere. जब मुझे आते जाते दिखते रहते हैं, I will keep these photographs somewhere where I am able to see all the 3 people. And whenever I see them, at least 3 times we have to do it in a day. It can be more. For example, you have written it for your grandma. Thank you, grandma. If you want to write the name, that is also fine. But if you write grandma, you understand. Because ye apne liye hai. So we have to do this practice, this ritual 3 times, at least. If you are moving around a lot, carry the photographs with you in your bag or pocket and make an effort to look at the photographs 3 times during the day, following the same procedure. Now you know how to use gratitude's magical power to transform your relationships into magical relationships. Although it is not part of the requirement of this book, you may want to take this amazing practice and use it every day if necessary to make every relationship you have magnificent. You can use it on the same relationship as many times as you want. The more you can be grateful for the good things in your relationship, the faster every relationship in your life will miraculously change. So my dear friends, as I am telling you, this is the first practice amongst all the practices about the pillars of life we have been talking about. So that means our relationships are very important. So now we have got the option. We can do this practice every day. As yesterday Harisha was telling us, it hardly takes 5 to 7 minutes every day if you sit down
to do this. Again, ये मेरी ask है. यदि मेरी ask है कि मुझे ये सारे practices करनी है, I want to do this book thoroughly. I want to change my life. My life has changed. Then it would hardly take some time. So अब मैंने लिख लिया है, मैं thank you कर रही हूँ, ये हो गई मेरी. Now, if I'm moving a lot, I cannot say, for example, मैं सुबह को जाके रात को ही आऊंगी, so I can carry those photographs in my pocket, or they're there in the mobile. I have just to open and do it, but I have to do it. Now, see, one of the benefits of gratitude is that apart from giving you satisfaction, it gives you very beautiful, strong relationships. So if I am doing it every day for some person, how would my relationship be? मैं रोज उनको कितनी अच्छी एनर्जी भेज रही हूँ, तो नेचुरली जो मैं दे रही हूँ मेरे पास क्या आएगा? बहुत खूबसूरत आएगा. So the option is, I can do for the same 3 people every day, or I want this in this my close circle, there are few more people, and I want my relationship to be better. I can take 3 people, different 3 people every day. Getting my point? So this is how we can do it. Any questions, Vidya ji? मैम यही पूछना था कि उसी को रिपीट करें, द सेम पर्सन अगेन एंड अगेन, और न्यू वन? Depending, it is our decision. For example, मुझे आपके साथ, आप मेरे बहुत क्लोज में हैं और मुझे आपके साथ और अच्छा रिलेशनशिप करना है. I can do same thing for you 3 days, for 1 week, and then I'll change. Or if I want to do every day for 3 people and keep doing this practice for many days, that is also fine. देखिए, ये सारी चीजें हैं कि हम इसमें जितनी मेहनत करेंगे उतनी खूबसूरत चीजें होंगी, उतनी खूबसूरत अपनी लाइफ होगी. Right? So this is how it is. पॉइंट आया था ना कि अगर आप एक कंप्लेन करो तो उसके साथ 10 blessings you do at least. Yes. Then the relationship. So ऐसे हो जाता है कि अभी मैं I'm doing that 3 people thing, exercise, और ऐसे बीच में मैं कहीं जा रही हूँ और कोई आया और आई एम लाइक व्हाट दिस पर्सन, मुझे लेट हो गया, मुझे अभी निकलना था, ये कंप्लेन हुई, लाइक यू नो अननोइंगली डू दैट. सो फिर हम उसको फिर बैठ के उसकी 10 चीजें, गुड थिंग्स वी शुड रिमेम्बर, ऐसा कुछ. यस, एक कंप्लेन इन द सेंस कि ये एक अच्छी फीलिंग भी तो नहीं है कि यार पता है आज वो आके ना मेरा तो बहुत टाइम खोटी हो गया. I'll give you an example. Suppose somebody came to my house or somebody gave me a call and then the 15 minutes went on the call and then I kept the phone and said, oh my God, 15 मिनट खोटी कर दी इस इंसान ने मेरे. One thing is, how many people would call you? Very few people in the world who would require your help, right? Now, if somebody has called you, we are not grateful. We are least grateful that the person could. आप किसी को call करते हैं, you want to believe in that person, right? You believe in that person. Therefore, you give a call to that person. Why else would somebody give you a call? So, my dear friends, this is how it is. So, this is also a complaint, right? Okay. Yes, Jatin sir. Magic practice number 3, magical relationships. First, repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Choose 3 of your closest relationship and collect a photograph of each person. With a photo in front of you, write 5 things you are grateful for about each person in your journal or on your computer. Begin each sentence with the magic words thank you. Include their name and what you are specifically grateful for. Carry the 3 photographs with you today or put them in a place where you will see them often. Look at the photographs on at least 3 occasions. Speak to the person's face in the photo and thank them by saying the magic words thank you and their name. Thank you, Hele. Carry on, sir. Finish it. Before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day.
Thank you, Jatin sir. So what is tomorrow's practice? Today's practice rather. First of all, we will write at least 10 blessings. If we have not written this morning, we will write 10 blessings. How are they written? You already know now. You have to write the 10 practices, the 10 blessings, and say thank you, thank you, thank you. As I suggested, I use different pen so that I don't forget. Otherwise, I used to forget. मैं लिख लेती थी thank you, वापस revisit करके thank you नहीं करती थी. Initially when I started. So this is how I still now till date मैं अभी भी ऐसा ही लिखती हूँ. I write whatever blessings I have to write, and then I use my another pen color to use the 3 words thank you, thank you, thank you. This is how I do it. So this is how I'm suggesting. ये आप करेंगे. देखिए रोज नया दिन है, रोज नहीं करेंगे. क्यों करेंगे हम ये 28 दिन रोज क्यों करवा रहे हैं? बिकॉज ये वही वाला है. फुटबॉल तो मैं खेलती नहीं हूँ, तो अब मुझे प्रैक्टिस नहीं है, तो प्रैक्टिस करने के लिए मुझे रोज करना पड़ेगा फुटबॉल की प्रैक्टिस. In the same way, to be in gratitude, I have to learn it every day, to look into my life and dig all the small, small things. We will not take things for granted. हमारी लाइफ में अच्छी चीजें हो रही हैं तो हम उसके लिए शुक्रिया करेंगे. This is how it is. And then today's practice, we are taking the photograph of 3 close people. Keep the photograph in front of us. Keep a notebook and a pen we have, and we write 3 good, what is good in them, what do you like in that person, or what the person has done for you. Means I am, again, gratitude जब भी लिखेंगे हम दोनों आंसर जरूर होते हैं. किसको दिया gratitude और क्यों दिया, तब भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा. So I have written it 5 for every person, and then I would write, remember, right? Thank you. For example, I have to say thank you to Renuji. So thank you, Renuji, for coming to the session today. Right? So this is how we can do it. It's a very simple thing. We can do many things about it. Again, using your rock. रात को सोने से, this is the last practice to be done. क्यों करनी होती है हमें ये last? देखिए साहब, रात भर हमारा सबकॉन्शियस माइंड चलता है. आपने देखा होगा अपनी लाइफ है, किसी दिन हम किसी के साथ बहुत तू मैं हो जाती है, कोई झगड़ा हो जाता है, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, तो वो जहन में रह जाता है. रात को हम सोते कैसे हैं? बहुत अच्छा नहीं सोते हैं, उसी थॉट के साथ सोते हैं. रात को सपने आए चाहे ना आए, पर सुबह जब हम उठते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले वही चीज आती है. So that means subconscious mind, जिस चीज के लेके हम रात को सोए हैं, सुबह को वही चीज के साथ हम उठते हैं. तो therefore ये मैजिक रॉक प्रैक्टिस इसीलिए रात को है, वरना तो हम कभी भी बोल सकते थे करिए. So we do it the last thing in the night. Why? Because it will, the whole night it will work. We are sleeping with gratitude, right? तो सारा दिन हमारा सारी रात subconscious is using that beautiful feeling of gratitude. So next morning when we get up with gratitude. और उसके बाद जब हम ये 10 blessings लिखते हैं तो सारा दिन set हो जाता है grateful होने के लिए. This is how the things are. That ends today's practice. Day 3, the magical relationships. Any question? Yes, sir. Majid, sir. Thank you, Harikishan ji, sir. Thank you so much. Anybody else would like to ask something? Will share something? Manjeet ji ने no complaint किया था. Why don't you share your experience, Manjeet? मैम मैंने ना सर लास्ट रीडिंग थी ना, लास्ट बुक रीडिंग मैजिक प्रैक्टिस की, तब मैंने ये रिलेशनशिप चैप्टर, दैट वाज द फर्स्ट थिंग आई अटेंडेड, फर्स्ट क्लास एवर अटेंडेड विद योर. तब मैंने ये रिलेशनशिप वाला किया था. मतलब मुझे किसी से मेरी बहुत कंप्लेनिंग इरिटेशन हुआ था उस दिन में, और क्लास रात को थी शायद, नाइट को. मैंने क्लास अटेंड की और तुरंत बाद में क्लास के बाद ये किया कि I was very upset and the other person was very upset, and I just, मन में I started thinking good things, 10 things, just started thinking, और मैं सो गई. And
मॉर्निंग जब मैं गई और उससे मिली, इट वाज लाइक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। आई मीन इट वाज सो ब्यूटीफुल, आई जस्ट कुडंट बिलीव। और तब से मैं ये करती हूँ। ऑफ कोर्स बीच बीच में भूलती हूँ, जैसे कंप्लेनिंग होता है, बट उसी के साथ नहीं, मतलब आई ट्राई टू डू इट। लेकिन बीच में वंडरफुल। कोई रीडिंग सेशन नहीं था ना, तो एक ब्रेक मिला, तो उसके बाद हम सब भूल गए, कुछ किया नहीं। जैसे आप बोल रहे थे फुटबॉल प्रैक्टिस नहीं रही, तो प्रैक्टिस ना करो तो भूल जाते हैं। लेकिन जब याद आता है, जैसे आज फिर से याद हो, अरे ये तो करना था। जैसे मैं कंप्लेन करती हूँ बहुत इनके बारे में, हस्बैंड के बारे में, प्रेज भी करती हूँ, लेकिन कंप्लेनिंग है ना वहां पे तो। बट आप मुझे पसंद है, बट ये किया आपने, तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप दैट। Wonderful. Thank you या for ऑफ कोर्स। sharing, my dear. Thank you for sharing. Because, या मैम, this थैंक way, यू फॉर, एंड थैंक यू beautiful, सर ऑल्सो फॉर दिस ब्यूटीफुल थिंग इन माय लाइफ। beautiful, wonderful, great. Oh, any question, dear friends? There are मैम some. मैं भी शेयर करना चाह रहा था Oh, कि sir, जैसे वो sir. मैंने नो कंप्लेंट डे एक दिन सुना था मैंने, तो मैंने आई ट्राइड कि आई शुड नॉट कंप्लेन, या लाइक जो कोई बोल रहा है उसके बारे में। तो उस दिन लाइक मेरे माइंड में ये रहा, तो जो भी चीजें थी तो जैसे मतलब इन फ्लो, जिसने जो बोला तो मैंने उस पर रिएक्ट नहीं किया, तो मैंने उसको पॉजिटिवली लिया। So that was very good, feeling and experience. That was awesome experience because like उस दिन क्या हुआ कि मतलब मुझे चीजें अदर एस्पेक्ट के बारे में पता चला कि लाइक व्हाट कैन बी द अदर वे Okay, ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग। तो wonderful. वो चीज था। और अभी क्या होता है, कभी कभी मेरे साथ जैसे कोई कंप्लेन करता है ना, तो मुझे उस पे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तो वो एक्चुअल में मुझे थोड़ा आई हैव टू वर्क अपॉन दैट। वो ऐसा नहीं करना है मुझे। लेकिन मुझे वो चीज बड़ी मतलब मेरा क्या वो रहता है पॉइंट कि मैं अगले वाले को बोलूं कि ये चीज नहीं करनी है, तो बट वो तो उसका व्यू है। सो देखिए, एग्जैक्टली। वेरी वेरी गुड यू ब्रॉट दिस अप सर। हमारे पास एक ग्रुप में एक और मैम थी, उनके साथ भी ऐसे ही हो रहा था, तो मैंने उनसे पर्सनल पे भी यही बात करती। देखिए, ये एक बहुत बड़ा ट्रैप हो जाता है हम लोगों के लिए। हम कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, किसी पार्टी में जाते हैं आप, तो एक टेबल पर सिर्फ नॉनवेज सर्व करा है, बाकी सब टेबल पर वेजिटेरियन है। तो जो वेजिटेरियन है वो उस नॉन वेजिटेरियन पर्सन को बहुत अच्छी से नहीं देखते। दे ईट नॉन वेजिटेरियन। तो हम वेजिटेरियन है तो क्या हम सुपीरियर हो गए? ऐसा नहीं है। ये सबका अपना अपना रोल है, अपना अपना सोचना है। हम उस लॉजिक में नहीं जा रहे हैं कि किसी और को काट के खा रहे हैं, हम उसमें नहीं जा रहे हैं। बट हम जस्ट बिकॉज हम वेजिटेरियन हैं और नॉन वेजिटेरियन को हम गलत दृष्टि से नहीं देख सकते। इन द सेम वे, हम कोई चीज करना, देखिए हम सब लोग अलग अलग जर्नी पे हैं। अपन कितने लोग हैं फिलहाल यहाँ पर? वी आर 18 पीपल ऑन, आई कैन सी ऑन स्क्रीन। वी ऑल आर एट डिफरेंट लेवल, है ना अपन सब लोग। तो हम जब कोई चीज करना शुरू करते हैं ना, तो फिर हम दूसरे को बोलते तू भी करिए। वही वाली बात है कि हम रिलेशनशिप्स को चेंज करना चाहते हैं। वी कंप्लेन अबाउट द रिलेशनशिप। तो हम उस, ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है सर। इसमें अपने को नहीं फंसना है। यही सोचना कि उसकी अपनी जर्नी है, उसकी। भाई जैसे सर धरेश सर कहते हैं कि 700 लोग हैं इस ग्रुप में, 700 लोग क्यों नहीं आए हैं? ये उनकी सबकी अपनी अलग जर्नी है। जिसको बदलना है वो आया है, राइट? सो इसमें भी कोई गलत नहीं है, इसमें सही और गलत में नहीं जा रही हूं मैं। वी ऑल आर एट अ डिफरेंट जर्नी। तो हम दूसरे के साथ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, दे आर एक्सरसाइज फ्रीक्स। मतलब आप उनसे 4 घंटे उनको जिम में भेज दो तो दे आर वेरी हैप्पी। आप उनको 2 घंटे के लिए वॉक पे भेज दो तो वेरी हैप्पी। आई एम नॉट दैट दैट पर्सन। मैं थोड़ा बहुत सब चीज कर लेती हूँ। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो ज्यादा अच्छे हैं या मैं अच्छी हूँ वो इतने अच्छे हैं, राइट? वी ऑल हैव डिफरेंट थिंग्स। गुड, यू शेयर, वेरी गुड। आई अप्रिशिएट दिस सर। मैम और इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं बताता हूँ कि जैसे घर में ना जो दिया होता है ना, तो उसमें ऑयल ऑयल जब मतलब डालते हैं ना हम लोग, तो क्या हो रहा है कि
मतलब वो बच्चे है ना जैसे, तो वो लोग क्या करते हैं, वो ज्यादा ऑयल उसमें डाल देते हैं, एकदम भर के डाल देते हैं। तो वो मैंने उसको एक दो बार तीन बार बोला, बट फिर मैंने सोचा कि व्हाट कैन बी द रीजन ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो मैंने देखा कि वो बॉटल जो है ना, मतलब वो जब डालता तो उसमें ज्यादा ऑयल जो है पायलट, गिर जाता है। तो मैंने क्या किया, मैंने अब डिस्पेंसर मंगवाया है, तो वाओ। जिससे कि कि वो मतलब अब जब वो डालेगा तो थोड़ा थोड़ा गिरेगा उसमें, तो ही विल रियलाइज कि नहीं, आई हैव टू तो वो मेरे दिमाग में चल, बड़े दिनों से मैं सोच रहा था कि यार इसको मैंने इतनी बार बोलता हूँ, मैं ये समझ नहीं रहा क्या हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा, एक दिन मैं वो देख रहा था, तो मुझे आइडिया आया कि नहीं, लेट मी ट्राई दैट वे। तो सी, अच्छा, अब आपने जब ये करा सर, तो अब आपको एक अच्छा सा एक सुकून, और डोंट यू थिंक यू फील वेरी गुड अबाउट इट? हाँ जी, अब ऐसा है कि अभी चाहे ज्यादा भी गिरे, मतलब उसमें वो फुल भी कर देगा, लेकिन ये रहेगा कि नहीं, नेक्स्ट टाइम उसको समझ में आ जाएगा वो। नहीं, एक वो वाली सिचुएशन जब आप रोज देखते थे दिया ओवरफ्लो हो रहा है और आपको गुस्सा आता था, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ है जी। ना, एक वो इरिटेशन होता था अपन को। अब हम्म, अब वो ही आप उनकी प्रॉब्लम को समझ पाए कि एग्जैक्टली। सपोज बच्चा है और उसको ये नहीं पता मैं इसको कैसे टिल्ट करूं कि ज्यादा ना बहे, तो नाउ यू हैव अंडरस्टूड द चाइल्ड और whosoever was doing, now what kind of a relationship, आपको उस इंसान के प्रति कंप्लेन कम हो गई ना? यस, राइट, बिल्कुल कंप्लेन कम हो कम हो गई। गई। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। और नाउ आई अप्रिशिएट हिम इंस्टेड। वेरी गुड, वेरी गुड। मैडम वंडरफुल, वो है थैंक्स। ना, मुन्ना भाई का पिक्चर है ना, वो पान तुपता है, हाँ, वो साफ करता थैंक यू बोलता है। हाँ, वेरी गुड एग्जाम्पल। या, वंडरफुल, वंडरफul for sharing. Thank you so much, sir. Any question, dear friends? करेंगे तो आपको महसूस होगा, करेंगे तो अपन को एक्सपीरियंस होगा, करेंगे तो प्रैक्टिस हम उस मेक्स लेवल मैन को। परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यस, दिस इज हाउ इट इज। अरे ओके। एक मिनट, उसमें एनएलपी में रुचि मैम उन्होंने बोला प्रैक्टिस हाँ, मेक मैन परफेक्ट, उन्होंने बोला प्रैक्टिस मेक मैन हैबिचुअल। तो हाँ, वेरी गुड, आई लाइक इट। या सही एब्सोल्युटली बात है, सर, बिल्कुल सही बात परफेक्ट है। होता है पर हैबिट हो जाती है। हाँ, यू नो हाउ टू डू दैट थिंग। इफ यू गो ऑन डूइंग ग्रेटिट्यूड, आपको हैबिट हो जाएगी। हाँ, हाँ, फिर आपकी बहुत सारी कंप्लेन्स निकल जाएंगी और यस। आएंगी भी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको आज सुबह का एग्जाम्पल दूं, आपको मेरे साथ क्या हुआ। हमारे वन ऑफ माई कजिन्स के यहाँ पर शादी है, तो उनके 2 दिन का इनविटेशन आया। तो हमें लगा यार घर में बहुत सारी चीजें होती हैं, उनका इनविटेशन नहीं आया। तो उसमें बाद में मुझे 3 पॉजिटिव चीजें नजर आ गई उसमें। तो अब मेरी एनर्जी पूरी शिफ्ट हो गई। तो व्हाई एम आई गिविंग यू दिस एग्जांपल, कि ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में ये चीजें नहीं आएंगी, बट नाउ आफ्टर गोइंग थ्रू दिस ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, हम उन चीजों को में से जल्दी बाहर आ जाते हैं एंड वी लर्न हाउ टू ओवरकम ऑल दोस थिंग्स। अगेन, यदि मैं उस थॉट में पड़े सोचती रहती, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मेरे पास इस तरह की चीजें दिन भर में बहुत आ जाती। तो नाउ आई हैव पुट अ स्टॉप ओवर दैट। सो दिस इज हाउ वी विल डू इट। चलो, आई थिंक काफी टाइम हो गया है। थैंक यू डियर वंस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। See you, Harish sir will see you tomorrow. I'll be थैंक there. यू ऑल ऑफ यू। Yeah, thank you so much. Have a blissful day. Thank you.